Hi students, आज लेक्चर में स्टार्ट करिबा अलजेब्रा ऑफ लिमिट। सो एटी किछटा चारटा स्टेटमेंट अछि ताको आपण खाली मन रखिबे। या छडा हमें जो मेन इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडा को पूर्व लेक्चर रे स्टार्ट करिथिले ताको कंटिन्यू करिबा एंड आउ किछि क्वेश्चन अछि जाको मु कंप्लीट करिबे आज लेक्चर रे। सो आज हेडलाइन होची अलजेब्रा ऑफ लिमिट। अलजेब्रा ऑफ limits. Okay. The first study limit f plus g. So we have two function. गोटे function होची f, गोटे function हो g. जदि से ऐड होचंती ताहले सी हबो limit f plus limit g. This is equal to L plus m. हला तापरे second limit f minus g which is equal to limit f minus limit g. This is equal to L minus m. एठी L को मु लिमिट f को L धरिची, लिमिट g को मु m धरिची. Now third number एटा addition, subtraction, then multiplication. Limit f dot g एठी हमें डॉट प्रोडक्ट यूज करछे, क्रॉस एठी यूज करने. लिमिट f dot limit g is equal to L dot m. हला then four number limit f by g is equal to limit f divided by limit g. This is equal to L upon m. Okay, so एठी हमको कंडीशन दे दवा पड़ियो कि m टा एठी नॉन जीरो हो. So these are the 4 point you need to remember. आपन के चारिटा पॉइंट मन रखिया को पड़िबो. एहा परे सीधा हमें कंटिन्यू करिवा जो प्रॉब्लम गुडा को हमें स्टार्ट करथिले पूर्व लेक्चर रे ताकू हमें कंटिन्यू करिवा. So next question. Question number 1. आज क्लास तो मु क्वेश्चन नंबर 1 रो ही स्टार्ट करूची. बाकी आपण पूर्व लेक्चर रे जोडी छाडी थिले सेडू क्वेश्चन नंबर मध्ये नेक्स्ट देई परिबे. Let fxy is equal to xy divided by x square plus y square. Okay, then show that the repeated limit exists and are equal, but simultaneous limit does not exist. Okay, so let this function then हमको शो करिया पड़िबो कि रिपीटेड लिमिट होची से एग्जिस्ट करूची और इक्वल होचंती, बट द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट हियर. आको हमको प्रूव करिया को पड़िबो. ओके, नोट करनी आते क्वेश्चन को.
सो आम पाखरे एठी गिवन अछि fxy is equal to xy upon x square plus y square. ओके ये आम पाखरे गिवन अछि. अच्छा आर साइमल्टेनियस लिमिट एंड रिपीटेड लिमिट आम प्रथम देखिबा. प्रथम आम आर साइमल्टेनियस लिमिट को बाहर करिबा. साइमल्टेनियस लिमिट. सो साइमल्टेनियस लिमिट पाई आम कौन करिबा ना गोटे पाथ चूज करिबा. y is equal to mx एठी x square y square तले अछि. that is equal to f x mx is equal to x mx divided by x square plus mx रो square. so this is equal to mx square divided by एठी x square plus m square x square which is equal to mx square by x square common नेले 1 plus m square. yes जाउची and this is equals to m upon 1 plus m square x square कटि जीवो. okay which is different for different values of m which is different for different values of m हला. सो एठी आमे देखंतु which is different for different values of m. so the simultaneous limit does not exist. okay so the simultaneous limit does not exist. तापरे नेक्स्ट आमे करिबा कोन repeated limit. repeated limit. okay अर्थात limit x tends to 0 limit y tends to 0 fxy and limit y tends to 0 limit x tends to 0 fxy. ओके ताको हमें बाहर करिवा रिपीटेड लिमिट 1 by 1 हमें करिवा एठी सीक्वेंशियली. फर्स्ट हमें कौन करिवा ना फिक्स करिवा x को x is non-zero and y tends to 0. ताले limit y tends to 0 fxy is equal to limit y tends to 0 xy divided by x square plus y square is equal to 0 divided by x square which is equal to 0. our value asla 0. okay
then limit x tends to 0, limit y tends to 0, fxy is equal to आर वैल्यू केते आस्तला स्टूडेंट एटी 0 आस्तला ओके आर वैल्यूटा लिमिट y टेंड्स टू 0 fxy आर वैल्यू पकई देले केते 0 दैट इज लिमिट x टेंड्स टू 0 0 इज इक्वल टू 0 एटी हमें बाहर करथला ना ई जगह रे लिमिट y टेंड्स टू 0 fxy आर वैल्यू केते 0 पाई देले हमें वैल्यू पकई देले 0 आसला अगेन फिक्स y नॉन जीरो हमें y को एटी फिक्स करिवा एंड x नवा 0 तो लिमिट x टेंड्स टू 0 fxy is equal to limit x tends to 0 xy divided by x square plus y square. This is equal to 0 divided by y square is equal to 0. Okay. Then limit y tends to 0, limit x tends to 0, fxy is equal to limit y tends to 0 0 आर वैल्यू केते आस्तला एतिका टर्म रो 0 आस्तला तनो 0 इज इक्वल टू 0 ओके तो एठी हमें कौन पाइले देखंतु एठी हमें पाइले इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 so from 1 and 2 from 1 and 2 both repeated limit exist and are equal to 0 हला क्लियर हेले ती जिंस पूरा लाइन बाय लाइन एठी आपन पढाई देली रिपीटेड लिमिट रे हमें कोन कले ना एठी गोटा को फिक्स रखिले आ गोटा को टेंस कले 0 को जेमती हमरो रिपीटेड लिमिट रे थाए एठी फर्स्ट x को फिक्स करी कि y को टेंस कले 0 आड़ को तो मते 0 मिलिला आर वैल्यू एंड सेकंड रे मु y को फिक्स रखी कि x को 0 को टेंस कली तो मते अगेन 0 मिलिला सो in both the cases we got the same value, that is 0. So we can say the repeated limit exists and are equal, but the simultaneous limit is depend upon a constant, that is m, so it does not exist. Okay student, ठीक अच्छी चलो तो आउ गोटे क्वेश्चन को एठी करिवा आउ गोटे क्वेश्चन करिवा चलो एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा क्वेश्चन नंबर 2 show that the limit exists at the origin but
the repeated limit do not, where function it given dala fxy is equal to condition it देइछि again x sin 1 by y plus y sin 1 by x जोकि xy is not equal to 0, further 0 where xy is equal to 0. Okay, fine. चलो एटा को प्रूव करिया. ये क्वेश्चन पढ़ुछि एग्जाम रे. सॉल्यूशन स्टूडेंट सब बुझी पारछन त ठीक ठाक. मोटी सब कुछ एकदम स्पीडली चली गोटे पर गोटे क्वेश्चन करी चलती. आई डोंट थिंक एथरे आपनकर किछि डाउट होतिबो कारण मु प्रत्येक स्टेप को इजी इजी करी सॉल्व करूची. ओके ओके एठी हमें स्टूडेंट एप्सिलॉन डेल्टा मेथड को भी यूज करि परिबा. तापरे एठी एप्सिलॉन डेल्टा मेथड को भी हमें स्टूडेंट यूज करि परिबा. आ किछि किछि मेथड अछि ताको मथि यूज करि परिबा. तो एठी मु यूज करूची कोडा यूज कले ठीक हबो. एप्सिलॉन डेल्टा मेथड को यूज कर दोची. ओके एग्जाम रे आपन को जोटा सुविधा हवा स्टूडेंट यूज करिवे बिंदास, किछि प्रॉब्लम नाही. ओके नाउ using epsilon delta method. तो एप्सिलॉन डेल्टा मेथड को मैं यूज करूची. ओके हमें जानी फॉर एवरी epsilon greater than 0 there exists delta greater than 0 such that whenever zero less than x square plus y square root over less than delta we have. ये स्टूडेंट तो सेम डेफिनेशन को मु लिखुची. एठी सेम डेफिनेशन को मु एठी लिखुची fxy minus 0 रो mod लेस देन इप्सिलॉन. मु एठी इप्सिलॉन डेल्टा डेफिनेशन ऑफ लिमिट रो जस्ट स्टेटमेंट टाको लिखि देली. एठू ए पर्यंत केवल स्टेटमेंट टाको ही मु लिखि देली. ए पर्यंत क्लियर हेले. मु एठी किछि स्टार्ट करनी. मु एठी केवल इप्सिलॉन डेल्टा रो जो डेफिनेशन थिला फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल पई तार स्टेटमेंट टाको लिखि देली. एबे मु स्टार्ट करिया पई जाउची प्रॉब्लम. ओके सो हमें प्रथमे जानिबे कि कोन हमर गिवन अछि. गिवन कौन अच्छी f x y is equal to x sin 1 by y plus y sin 1 by x. Okay, if xy is non-zero and
0 when if अच्छा हम पाखे if अच्छी तो मुझे if लिखुची when लिखिया की दरकार नहीं if xy is equal to 0 तो ये दीटा कंडीशन देला जोड़ी xy नॉन जीरो होउचंदी हम पाखे ये रहउची टर्म जोड़ी xy 0 हो जाउचंदी सेठी 0 हो जाउची टर्म ओके ताहले नेक्स्ट bound f x y ର mod that is for xy non-zero so f xy ର mod is equal to तार जो भी वैल्यू थिला ताकू मैं लिखि दउची x sin 1 by y plus y sin 1 by x ର mod ये लेस देन हवा कहा ठारू स्टूडेंट ये लेस देन हवा कहा ठारू आकु आमे केमिति लिखि परिबा देखंतु यतिक टर्म को आमे केमिति लिखि परिबा एठी लिखि दउची आपन को पई x mod dot sin 1 by y ର mod plus y mod into sin 1 by x रो mod हला अच्छा ये अगेन लेस देन इक्वल हबो कहा ठारू x mod plus y mod ओके x mod plus y mod for xy is equal to 0 fxy is equal to 0 xy जदि 0 होची ताले fxy मध्ये 0 होची so f xy ର mod is equal to केते हे जिवो fxy ର mod is equal to केते हे जिवो 0 हे जिवो ओके which is less than equals to x mod plus y mod ये टर्म टा मु लिखिली अगेन thus in all cases fxy रो mod is less than equal to x mod plus y mod okay now आमे जदि याकू रिलेट करिबा नाउ ओके एटी स्टूडेंट गोटे कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दउची ठीक है ये जो लाइन टा देखंतु एटा केमिति हला ए लाइन टा टिके आपनकर कंफ्यूजन रह जाइथिबो मु ए लाइन टा के भी कहि दउची अच्छा x डॉट sin 1 by y mod x mod डॉट sin 1 by y mod देन एठी प्लस y mod sin 1 by x mod तणो एठी केमिति x mod plus y mod हला माने ये कुआडे गला ये दीटा को कुआडे गला केमिति एटा को x mod plus y mod कली ए जिंसटा को म आपन आउथरिटी कहि दउची
ओके यही पार्ट रे आपनकर कंफ्यूजन रहिथिबा प्राय पिलांकर जो माने बुझी देथिबे तो बुझी देथिबे वेरी गुड जो माने कर एई जिंस रे टिके डाउट रहउची मो सेडो क्लियर कर दउची एटी आपनकर गोटे कांसेप्ट को मन रखिबार अछि गोटे नोट मु आपनको एटा लिखि दउची से नोट टाको मन रखिबे साइन ऑफ एनीथिंग जदि आम मॉड करूचे साइन ऑफ एनीथिंग जदि आम मॉड करूचे माने ए जगह किछि भी आपण रखि पारिबे ओके साइन ऑफ एनीथिंग रो मॉड सी लेस देन इक्वल हबो 1 थारु से लेस देन इक्वल हबो 1 थारु यार अर्थात होची आमे x sin 1 by y जदि आम मॉड करिबा ताहले ये ही जाउची x mod into 1 अर्थात sin 1 by देखो sin 1 by y ये जो टर्म टा अछि यार मॉड ये केते ही जाउची 1 ही जाउची स्टूडेंट बुझियला दैट इज इक्वल टू x mod अर्थात ये जो टर्म अछि एटा हे गला x mod सिमिलरली आमे y sin 1 by x जदि मॉड करिबा ताहले एटा ही जो y mod डॉट 1 इज इक्वल टू y mod हला एति कि जिंस स्टूडेंट क्लियर हेले अर्थात आमे ये जो वैल्यू पाइले एठी ऑल केसेस fxy रो mod इज लेस देन इक्वल टू x mod plus y mod okay then this is true मत लिखुची this is true for all xy including when xy is equal to 0 xy equal to 0 so since fxy हमें केते पाइथिले fxy जदि xy equal to 0 हो तो fxy मध्ये 0 हबा ये ऊपर हमें पाइथिले स्टूडेंट तेणु fxy जेहेतु 0 होउची fxy is equal to 0 होउची that means आमे कौन करि परिबा कि एठी देखंतु ए जो लाइन टा मु लिखिली सेटा को फर्दर एठी लिखुची x mod plus y mod ये कौन हबो ना ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हबो ओके अर्थात आमे एटा को पुणी थरे एठी लिखि परिबा स्टूडेंट मु से स्टेप टा को ये कर देथिली ए लाइन टा को पुणी थरे भी आपण लिखि परिबे न हले ए जो लाइन टा अछि ना 10 पाखरु एटा को ए जगह रे भी लिखि परिबे हला एटा को ए जगह लेके म आउथरे लिख दोजी किछि कष्ट नाही बेसी समय लागिवनी तेणु so we have again मु लिखु जेठी आपण कंफ्यूजन हेबेनी कि डबल टाइम सर काई लिखिले गोटे टाइम लिखिबे आपण सेटा को म काटुनी ओके सेटा को म काटुनी x mod plus y mod now relate x mod plus y mod to x square plus y square रूट ओवर वर्तमान आमे x mod plus y mod को रिलेट करिबा x square plus y square रूट ओवर सहित अर्थात we want to express x mod
plus y mod in terms of x square plus y square root over which is distance from xy to 0 0 एठी बुझंतु मोठी कोन लिखिले we want to express x mod plus y mod in terms of x square plus y square root over which is the distance from xy to 0 0 अर्थात this is the distance xy ru 0 0 जीवा पई जो distance रहइबो सेटा होची x square plus y square रो mod हला अच्छा ताहले एटी स्टूडेंट देखंतु गोटे note that x mod जो होची से लेस देन इक्वल्स टू x square plus y square रो root over ये लेस इक्वल होची and y mod is also less equal to x square plus y square mod, right? So एमानकर combination that is x mod plus y mod is less equal to x square plus y square mod plus x square y square mod. Okay, 2 times, that is 2 times x square plus y square mod. Therefore हमें यार वैल्यू को स्टूडेंट लिखी देले therefore fxy mod is less equal to x mod plus y mod less equal to 2 x square plus y square root over. Okay, now choose delta. बर्तमान में डेल्टा इप्सिलॉन देखिबा choose delta in terms of epsilon, that is we want f xy mod is less than epsilon. So हमें बोथ केसेस रो हमें कौन पाइले हमें जो एभाव सॉल्व कले थी f xy रो mod is less than equals to 2 x square plus y square रो root over. So if we make 2x square plus y square root over, if we make 2x square plus y square root over less than epsilon, then automatically मोटी स्टूडेंट सबु जंक एठी
साइज करके थियोरेटिकली आपन लेखि बुझौची सब जिंस बिट बाय बिट आई डोंट थिंक कोडी गोटे पॉइंट रे आपनकर माने न बुझिला भलिया कोडी अछि सब किछि बुझी पारथिबे सब मोटी साइज करी लेखुची ऑटोमेटिकली f xy रो mod is less than epsilon, that is we want 2x square plus y square from mod less than epsilon, that implies x square plus y square mod is less than 2 type 2 पड़े आसिले epsilon divided by 2. Okay, so if we set delta is equal to epsilon by 2, then whenever zero less than x square plus y square root over less than delta, this is equal to epsilon by 2. Okay student, fine. So we have fxy रो mod less than equal to 2 x square plus y square root over is less than केते ही जबो 2 into epsilon by 2 which is equal to epsilon. Okay, that is therefore for any epsilon greater than 0, choose delta is equal to epsilon divided by 2, then if 0 less than x square plus y square root over less than delta, we get fxy रो mod less than epsilon. Okay, hence limit xy tends to 0 0 fxy is equal to 0. So एतिकरे आपनकर टोटल कंप्लीट प्रूफ हे गला. ओके, एंड दिस इज अ लॉन्ग क्वेश्चन स्टूडेंट, ये गोटा होची लॉन्ग क्वेश्चन. टोटल होची लॉन्ग क्वेश्चन. ओके, तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गोटे करिया. आ गोटे एग्जांपल देइची क्वेश्चन टा, एटा केते नंबर क्वेश्चन नंबर 3 बुक रे देइची, कंप्लीट करनवा.
show that the repeated limit exists at origin, but the simultaneous limit does not exist. But function where fxy is equal to fxy is equal to 1 0 if xy is not equal to 0, if xy is equal to 0. ओके आमको ये कौन पचारा साइमल्टेनियस लिमिट ये एक्जिस्ट करूनी बट रिपीटेड लिमिट ये एक्जिस्ट करुची या आमको दला क्वेश्चन रे. ओके लेट अस चेक रिपीटेड लिमिट एक्जिस्ट करुची. तो फर्स्ट आमे बाहर करबा एठी रिपीटेड लिमिट. ओके सो फर्स्ट लिमिट x tends to 0, limit y tends to 0 fxy. आमे फर्स्ट एठी कौन करबा ना फिक्स करबा x को, देन आमे नेक्स्ट रे आमे करबा y को फिक्स करबा. तो जदि आमे x को फिक्स करूचे, फिक्स x is non zero and y को आमे टेंस करूचे 0 को, देन सेठी हमर जो वैल्यू आसी जीवो एठी स्टूडेंट वैल्यू कोन आसीबो fxy रे वैल्यू, fxy रे वैल्यू एठी केते आसीबो 1 आसीबो एठी, कारण हम एठी 1 ही अछि. एठी तो कोनसी वैल्यू नाही, एठी y रो किछि वैल्यू नाही, 1 ही अछि. दैट मीन्स हम एठी लिखि परिबा लिमिट x tends to 0, limit y tends to 0 fxy is equal to limit x tends to 0 1 is equal to 1 हला. सिमिलरली सेकेंड पार्ट रे जे देखिबा लिमिट y tends to 0, लिमिट x tends to 0. एठी हमें फिक्स कले y को हला fxy, एठी हमें फिक्स कले y को एंड x को टेंस कले 0 आड़ को. सो fxy रो वैल्यू फर्दर आम पाखरे ना x अछि ना y अछि, तार वैल्यू मध्ये 1 ही हबो. ओके दैट इज लिमिट y टेंस टू 0, लिमिट x tends to 0 fxy is equal to limit y tends to 0 1 is equal to 1. Okay, so the repeated limit exist and are equal.
so repeated limit exists and are equal ହେଲା एटा इक्वल हे गला देन हमें साइमल्टेनियस लिमिट देखिबा एठी मु एठी रिपीटेड लिमिट लिखि दउची then simultaneous limit simultaneous limit आमे एठी गोटे पाथ नबा y is equal to x ये मोटे पाथ नउची with where x is non-zero hala then xy is equal to x square is non-zero ओके आम पाखे एठी कौन अच्छी एक्स वाई रे जो कॉन्टेक्स्ट देइची एक्स वाई जदि मु एठी y इज इक्वल टू x नउची ताले एक्स वाई जगह एठी हे जो x स्क्वायर x into x सो हे जो नॉन जीरो फॉर x is non-zero so f x x is equal to केते हे जिवो 1 हे जिवो f x x केते हे जिवो 1 हे जिवो so along this path so along this path f xy tends to 1 and f xy tends करिवो 1 को as xy tends to 0 0 okay again आमे कोन करिवा approach along the x-axis y is equal to 0 then f x 0 is equal to 0 f x 0 is equal to 0 so आमे एठी कहिबा since the limit along y is equal to x is 1 okay is 1 and along y is equal to 0 is 0 y is equal to 0 आमे जतबेला नउचे स्टूडेंट y is equal to जतबेला आमे 0 नउचे सेतबेले हमरो लिमिट कोन होची ना एठी 0 हो जाउची ओके y जतबेला 0 नउची एठी हमरो 1 होची एंड 0 बेले एठी 0 हो जाउची सो the simultaneous limit does not exist simultaneous limit
does not exist. ओके तो एटा गला एटा खत्म हो गला तिकरे रिपीटेड लिमिट exist at the equal simultaneous limit does not exist